Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra. इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मानसिक शांति के साथ साथ एनपीएस जीवन में संतुष्टि भी लाता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। देश और विदेश की आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताज़ा खबरें लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं और इन खबरों पर हम कार्यक्रम के दौरान चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार ए.के. भट्टाचार्य। भट्टाचार्य जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं अनुभा रोहतगी। Thank you, Vishal. Stock markets rebound on buying in IT stocks. Sensex ends over the 73,000 mark. Nifty finishes near 22,150. Prime Minister Narendra Modi distributes loans under the Prime Minister Swanidhi scheme to 1 lakh street vendors. And India's WPI inflation eases to 4-month low of 0.20% in February. आईटी शेयरों में लिवाली से घरेलू शेयर बाजारों में मजबूती। सेंसेक्स बढ़कर 73,000 के निशान से ऊपर हुआ बंद। निफ्टी 22,150 स्तर के नजदीक पहुंचा। प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 1 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण वितरित किए। और थोक मुद्रास्फीति फरवरी में कम होकर 4 महीने के निचले स्तर पर आई। सबसे पहले बात शेयर बाजार की कर लेते हैं। आईटी और मेटल शेयरों में लिवाली से आज प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक मजबूती के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 335 अंक बढ़कर 0.46% ऊपर 73,097 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.68% की तेजी से 149 अंक उछलकर 22,147 पर पहुंच गया। व्यापक बाजारों में भी आज रिकवरी देखने को मिली। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में 3.11% का उछाल आया और मिड कैप इंडेक्स 2.28% की बढ़त के साथ बंद हुए। Benchmark indices rebounded today on the back of buying in IT shares and metal shares as broader markets recovered from the previous day's sharp losses. The 30-share Sensex rose 335 points or 0.46% to close at 73,097. And the NSE Nifty jumped 149 points or 0.68% to finish at 22,147. Among Sensex firms, HCL Technologies, Wipro, Infosys, Bharti Airtel and Mahindra rose over 2%. On the other hand, Axis Bank, IndusInd Bank, Bajaj Finance and JSW Steel and State Bank of India were among the major laggards. The broader markets have also staged a smart recovery with the BSE small cap gauge jumping 3.11% and the mid cap index climbing 2.28%. In the sectoral indices at the BSE, services sector rose 4%, telecommunications sector index jumped 3.8%, utilities sector climbed 3.8%, and the oil and gas sector settled 3.1% higher. On the other hand, the BankX index ended in the red. और रुपए के प्रदर्शन पर नजर डालें तो अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 82 रुपए 82 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में बढ़त के साथ 102.82 पर चल रहा था। भट्टाचार्य जी, शेयर बाजार की बात करें तो कल हमने एक बड़ी गिरावट देखी
और 906 अंकों का हमने गिरावट देखी कल शेयर बाजार में। आज जो है कुछ मजबूती के साथ बंद हुए। आज दिवाली लौटी आईटी और मेटल शेयरों में, खास तौर पे आईटी और मेटल शेयरों में जो आज हम ये दिवाली देख रहे हैं, कोई खास वजह? हाँ, देखिए, जो पिछले दिन में 3 सेशंस में मार्केट गिरी है, और 3 सेशनों में जो मार्केट गिरी है, जो प्रधान कारण जो हमें दिखता है वो मिड कैप और स्मॉल कैप की जो स्टॉक्स जो हैं उसमें काफ़ी गिरावट आई थी। अगर आप परसेंटेज की ओर से देखेंगे, ये पिछले 3 सेशनों में कल तक करीबन स्मॉल कैप में करीबन 9% की गिरावट थी, और मिड कैप में करीबन 6% की गिरावट थी। और ओवरऑल इंडेक्स को देखें 3 सेशंस में करीबन 1.2% की गिरावट थी। आज जो हुआ है, अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो उसमें रिकवरी हुई है, और रिकवरी जो हुई है मिड कैप में भी हुई है, स्मॉल कैप में भी हुई है, पर अपने पुराने स्तर में मिड कैप और स्मॉल कैप अभी तक नहीं आई है। इसका मतलब यही दर्शाता है कि जो फ्रॉथ जिसे हम कहते हैं, जो फेना, जो पानी का जो होता है, वो अभी भी इस मिड कैप और स्मॉल कैप में है। और जैसे सेबी के चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने पिछले ही दिनों में कुछ कहा था कि इन सेक्टर में निवेश, अगर कोई निवेशक लगाता है पैसा, तो उसको सोच समझ के लगाना चाहिए, क्योंकि इस सेक्टर में स्पेकुलेशन तो ज़रूर है, पर उसके साथ साथ कोई बबल ना आ जाए, इसकी एक संभावना आ सकती है। तो इसीलिए जो मार्केट रेगुलेटर ने भी चेतावनी दे दी है, और जो मार्केट जो है वो भी वो दर्शा रहा है कि ये इन सेक्टर में हो रही है। आपने जो मेटल की बात कही, और मेटल और सर्विसेज, आईटी और मेटल, तो दोनों सेक्टरों में जो ट्रेंड्स जो आ रहे हैं कि आईटी सर्विसेज में जो एक्सपोर्ट्स की जो एक आउटलुक जो थी वो बेटर लगती है, और मेटल्स में जो प्राइसेस रिकवरी ज़्यादा आई है। तो दोनों चीज़ों से इन दोनों सेक्टर में तो आज की बढ़ावट हुई है। पर आज की जो मार्केट में जो रिकवरी हुई है, मैं समझता हूँ रिकवरी मेनली स्मॉल कैप और मिड कैप में जो लॉसेस जो पिछले 3 सेशन में 9% और 6% की हुई है, आज की जो रिकवरी हुई है, पर पूरी नहीं आई है अभी तक वो। तो हमें ये देखना पड़ेगा ये वॉलेटिलिटी कब तक जारी रहे, कब तक क्या हो गए। तब तक मैं समझता हूँ कि निवेशकों को ये देखकर समझना पड़ेगा कि सेक्टर को वो आजकल कम देखें, वो मिड कैप है या स्मॉल कैप है या लार्ज कैप है, उसको देखकर करें, क्योंकि लार्ज कैप में अभी भी बहुत स्कोप ज़्यादा बचा हुआ है। क्योंकि जब मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इतनी बड़ी एक उथल पुथल मस्ती है, इन्वेस्टर्स लोग जाते हैं लार्ज कैप की तरफ, और जब वो जाते हैं लार्ज कैप में नेचुरल एक बायोंसी आती है। तो मैं समझता हूँ लार्ज कैप का ये समय है, स्मॉल कैप एंड मिड कैप में थोड़ा रोक थाम से काम चलाना होगा। Mr. Volatility, you just mentioned the fact that, when there is a volatility seen in the mid and small cap stocks, investors tend to, gravitate towards the large caps. So, and some analysts also believe that after the SEBI chairman's statement on the mid and small caps, that most mid and small cap index stocks are still trading at full to lofty valuations and well above their fundamental value. So do you see even more correction in this segment? Well, I think they are very much, their valuations are a little exaggerated, little inflated. But once again, as I said, that instead of sectors, go into the mid cap or the small cap and the large cap. And within the mid cap and the small cap, it is not that every mid cap company is a culprit here. There are many mid cap companies in India, in the Indian stock markets, which are still doing very well. If you look at the auto component sector, there are mid cap companies which have done, even in today's day, they have done better. So if you look at some of the services sector mid cap companies, they're doing very well. So therefore, one has to keep this in mind, that which mid cap sector company you are looking at, you cannot just blindly follow that because it is a mid cap, so therefore there is a deep problem arising there. We will continue with this discussion, but after a short commercial break.
अपने सुरक्षित भविष्य के साथ साथ वित्तीय स्थिरता के लिए भी एनपीएस पर भरोसा करें। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Welcome back to Market Mantra. Mr. Bhattacharya, you're talking about the fact that the mid-cap, the one has to look at, there are many mid-cap stocks which have done really well. Yeah. So, post the SEBI chairman's statement on this particular segment, in this particular, how should a common investor or retail investor look at the mid-cap and small-cap? Should they just completely ignore the sector because of the, it's overvalued, or how should they navigate this particular sector? You have to look at which is the sector of the economy which is likely to do better in the near future, and there are no doubts about those sectors. And because, as we know, that the pace of economic activity is driven largely at this point in time by government expenditure in infrastructure. Yes. So if you look at some mid-cap companies in the capital goods sector, some mid-cap companies in the telecommunication or telecomponent sector, some mid-cap companies in the auto sector and the component sector, I would imagine there is a lot of scope still to stay on in mid-cap and yet not see the kind of red color that other mid-cap companies are seeing. So one has to be very judicious and cautious and selective about where you invest and how you invest. And would you give the same advice when it comes to volatility? Because, in this program, we keep talking about the fact that volatility is the nature, it's integral to the markets. But for a new investor, for a retail investor who's just entered the market or who's probably, investing, a few lakhs or a few thousands, how do you really understand the nature of this volatility? How do you keep calm? I mean, navigating it is one thing, but how do you assess the nature of this volatility? Well, I would only outline two points. Number one, that you have to first decide on your time horizon for which you want to stay in the market. If the investor's time horizon is only for 2 months or 3 months or 5 months, even 6 months, I would say stock market is not the place for you to invest. You have to have a minimum horizon of 2 years, because that is when you start making some gains based on a long-term trend in earnings. I'll just give you one piece of this thing, that in the current financial year, and we are coming to the end of the financial year, Nifty has shown a result of 26%. Now this is an unusually high number, Yes. but even if you get around 14-15% rise in a year, a stock market investor will otherwise feel very reasonably satisfied. So therefore, you have to see your time horizon, number one. And number two, you cannot be rattled by volatility in the stock market. The stock market is not for the weak-hearted. Stock market is a place where you need to pick, select, and be very, very judicious in your allocation of your resources. We're talking about the various sectors that have done well today. The banking sector, especially, we see that the banking sector, stocks of the banking sector, some of the major banks were, laggards today. So what is the reason that the banking sector is there are taking no the hit? specific issues right now, but I have a feeling that this is the end of the financial year. And this is also the end of the expiry of March series options contract. Okay. So therefore, a lot of money is being pulled out also to comply with those expiry of futures and options contracts. And at the end of the financial year, a lot of financial sector entities Yes. reallocate their resources or pull back their money. So the banks are normally the first sector which companies which get impacted by these year-end movements in the stock market. So I would not read too much into it. Otherwise, the financial sector is doing reasonably well. Their net interest margin is under pressure, but that is not come to a point where you need to worry at this point in time. Of course, going forward, there will be a lot of pressure on the banking sector as the net interest margin gets squeezed further, and there is some signs of NPAs getting, but right now there are no worries on the NPA, and on the contrary, the NPAs are still continuing to fall. Yeah.
घरेलू शेयर बाजारों के बाद अब रुख करते हैं वैश्विक शेयर बाजारों का। एशियाई शेयर बाजारों की बात करें तो आज एशियाई शेयर बाजारों में कारोबार मिला जुला रहा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.9% की बढ़त दर्ज हुई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.8% लाभ में रहा और जापान का निकेई 0.3% की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ हांगकांग के हैंगसेंग में 0.7% की गिरावट दर्ज हुई। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.2% का नुकसान देखा गया। यूरोपीय बाजारों में शुरुआती कारोबार में तेजी का रुख था। समाचार तैयार किए जाने तक फ्रांस का कैक 40 0.9% ऊपर चल रहा था और जर्मनी के डेक्स में 0.28% की तेजी थी। वहीं दूसरी तरफ लंदन का फुट्सी 0.02% के मामूली नुकसान से सपाट कारोबार कर रहा था। Moving on to the US market, the S&P 500 and the Nasdaq ended lower yesterday as investors booked profits in chip maker stocks while they braced for producer price data and further clues on the inflation trend ahead of next week's Federal Reserve meeting. The Nasdaq Composite closed 0.5% lower and S&P 500 fell 0.2%. On the other hand, the Dow Jones Industrial Average gained 0.1%. Mr. Bhattacharya, we saw the consumer price data US came out, and it has risen about 0.4% in February compared to and 3.2% from a year ago. And now they're looking ahead for the producer price data and the Fed Reserve meeting, which is on March 19th and 20th. What are your expectations from this meeting? My sense is that the Fed is completely committed to the idea of first bringing the inflation rate down to their target rate of 2%. Till such time they are convinced they will not go anywhere near giving even a signal that the interest rate cycle is going to ease. So my sense is we don't expect anything. They want very, very sincerely want both the executive as well as the monetary policy authorities. They want a soft landing for the US, and the soft landing for the US economy can probably be facilitated if the Fed maintains this kind of a cautious stance, eyes firmly focused on the inflation target. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पीएम स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी वालों के लिए जीवन रेखा साबित हुई है। उन्होंने आज दिल्ली में पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को संबोधित किया। श्री मोदी ने इस योजना के तहत 1 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण वितरित किए। उन्होंने कहा कि लोगों ने कोविड के दौरान रेहड़ी पटरी वालों की ताकत देखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का स्वनिधि महोत्सव उन लोगों को समर्पित है जो हमेशा सबके आसपास रहते हैं और जिनके बिना लोग अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने रेहड़ी पटरी वालों और सड़क किनारे दुकानदारों को समाज में उनके योगदान के लिए बधाई भी दी। भट्टाचार्य जी, जो पीएम स्वनिधि योजना, जैसे कि प्रधानमंत्री ने भी एक उल्लेख किया कि कोविड के दौरान रेहड़ी पटरी वालों ने कितना की ताकत देखी लोगों ने, तो पीएम स्वनिधि योजना जो लाई गई थी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ये अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण योजना रही है स्ट्रीट वेंडर्स को, रेहड़ी पटरी वालों को जिनके पास कारोबार करने के लिए पैसा नहीं होता, छोटी सी रकम भी नहीं होती, और उनको इस योजना से आपको लगता है कि कितना लाभ मिला और ये योजना कितनी सफल साबित रही है? देखिए, अगर आप जो रेहड़ी पटरी वाले जो हैं और कोविड के टाइम में उनको जो चोट पहुंची वो बहुत ही गहरी चोट थी, और उस समय जब इसका ऐलान हुआ तब उनके पास यही सिर्फ एक रिकोर्स था कि किस तरह से वो अपनी जो स्वाभाविक जीवन व्यवस्था जो है उसको चला सके। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मोदी सरकार की जो वेलफेयरिस्ट स्कीम्स जो हैं उन्होंने काफ़ी हद तक ये जो कोविड के बाद जो एक इकोनॉमिक डाउनटर्न आई थी, आने की एक आशंका भी हो रही थी, उसको जो समाज के जो अर्थनीति के जो निचले वर्ग के जो लोग हैं उनको सुविधा देने में समर्थ हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपने पीएम किसान बोलिए या जो एमएसएमई सेक्टर को जो लोन्स देने के लिए शिशु लोन्स की बात जो हो रही थी, उसके साथ मैं ये भी इसको भी स्वनिधि को भी जोड़ूंगा, और उससे ये बात साफ हो गई है कि हालांकि हमारे देश में जो पॉवर्टी लेवल नीचे आ रहा है,
पर जो लोग निचले हिस्से में काम करते हैं वो किस तरह से उनको पॉवर्टी के चपेट में फिर से न आए, जी, उसके लिए जो सपोर्ट देना चाहिए वो सपोर्ट ये देने में समर्थ हुई और है। बहुत अगर समय से आज लगा। अब पॉवर्टी रेट अगर मान लीजिए कम हो रही है, उसका एक प्रधान ये भी कारण है कि जो वेलफेयर स्कीम्स या फ्री फूड ग्रेन स्कीम, उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट जो आया है वो पॉवर्टी लेवल को नीचे करने में समर्थ हुई है। जी, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। अच्छे रिटर्न के साथ साथ एनपीएस खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। Welcome back to Market Mantra. Let's move on to the next story. The Fitch Ratings has raised its forecast for India's economic growth to 7% for the next fiscal year, starting from April 1st, backed by strong domestic demand and a sustained level of business and consumer confidence. With a stronger than expected 8.4% growth in gross domestic product GDP during the third quarter of the current fiscal year, Fitch sees the Indian economy expanding by 7.8% in the financial year 2023-24. This estimate is marginally higher than the government's estimate of 7.6%. In its latest global economic outlook, the rating agency said the country's economic growth continued to outperform quarterly forecasts with domestic demand. For the world, the Fitch Ratings has raised its 2024 global GDP growth forecast by 0.3% percentage points to 2.4% as near-term world growth prospects have improved. Mr. Bhattacharya, your first comment on this revised GDP growth forecast by Fitch. Well, as far as the current year is concerned, which is going to end in a couple of weeks now, I would say that even Fitch's rating is probably an underestimation, because as you would know that Reserve Bank of India governor has already indicated Yes. that the growth rate will probably be closer to 8%. Now, that is because if you look at the fourth quarter numbers, which are an imputed number, which shows the economy's growth rate around 5.9%, which is the same as the fourth quarter of last year. Now, if it is reasonable to assume that you cannot have a static growth for last year's fourth quarter Yes. and this year's fourth quarter, there will be a lot of increase that is not being captured right now. So if you keep that in mind, I would not be surprised at all if the full year's growth rate will not be 7.6% as the government's own estimate is concerned, but it is more closer to 8%. As far as next year's Yes. estimate is concerned, that is something that we need to see what kind of measures that the new government takes after the elections, the new budget, which will be unveiled in July. But if the Fitch and other rating agencies are estimating that the growth rate will be above 7% Yes. for next year, I would say that the Indian growth story is continuing to remain intact. But, coming to the Chinese growth story, in contrast to what, the rating agencies have been predicting for India, and they've been revising their forecast, China continues to be, a kind of a not exactly a problem, but a cause for worry for the rating agencies. And in this year also, Fitch has revised the GDP forecast for China. It has trimmed the forecast for China for 24 to 4.5% from 4.6%, which actually looking at it doesn't sound much, but it is still a trimming. Well, China is a story that is probably a case study. There are three factors that one needs to keep in mind. One is China is going through the phases of that period when you experience after a heavy increase in investments. Now, this is the post-heavy investment phase where the economy cannot withstand any more investments, and therefore the growth rate is coming down. The second is that the management of the COVID has been disastrous. And number three is that the new political compact in China in not trying to use its private sector and creating a lot of prickly points
for the private sector is costing them dearly in terms of overall economic growth. So all the three factors together, if China does not steer its economy to a growth level which is higher than what it is to see, I would not be surprised at all. And the Fitch has also raised the 2024 global GDP growth forecast by 0.3%, as it says near-term world growth prospects have improved. So clearly, it is also an indication that the world economy overall as a whole is now coming out of the COVID shadow, so to speak. And the drivers of the growth will be the Indian economy, and not the Chinese economy. The Chinese economy is going through those banks of the But it's still overinvestment. the world's second largest It's economy. still the second largest economy, but India is growing definitely at a much more rapid pace. So that's what is keeping the world economic outlook also intact. और अब बात कर लेते हैं मुद्रास्फीति की। थोक मुद्रास्फीति फरवरी 2024 में 4 महीने के निचले स्तर 0.20% पर आ गई है। ये जनवरी में 0.27% थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार फरवरी में खाद्य मुद्रास्फीति 6.95% हो गई। जनवरी में ये 6.85% थी। सब्जियों की महंगाई दर 19.78% रही। दालों की महंगाई दर फरवरी में 18.48% पर आ गई। भट्टाचार्य जी, महंगाई के मोर्चे पर देख रहे हैं बहुत राहत की खबरें आ रही हैं। कुछ दिन अभी 2 दिन पहले ही खुदरा महंगाई दर भी हमारे सामने आंकड़े आए थे और 5.09% पर हुई थी। कुल मिलाकर के रिजर्व बैंक के लिए बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन, सरकार के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए कंफर्टेबल सिचुएशन है, पर मैं ये समझता हूँ कि जो इन्फ्लेशन की जो ट्रैजेक्टरी है वो अभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंफर्ट लेवल के अंदर नहीं आई है। अगर आप होलसेल प्राइस इंडेक्स को भी देखेंगे, उसमें आप ज़रूर ये चौथी महीना है जब ये इन्फ्लेशन रेट नीचे आ रही है, पर और ये खबर हम और आपके लिए नहीं है, ये खबर अच्छी है कंपनियों के लिए। जो कंपनी है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है, मान लीजिए, ये कंपनियां ये थोक के चीज़ खरीदते हैं और इनमें भी जो फूड प्राइसेस जो हैं होलसेल प्राइस, ये बढ़ रही हैं अभी भी। तो मैं ये समझता हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए जो आपका सवाल था, इन्फ्लेशन रेट की जो ट्रैजेक्टरी है वो अभी भी उनके कंफर्ट लेवल के अंदर नहीं आई है। तो अगर आपका सवाल ये है कि अगले जो द्विमासिक जो मौद्रिक नीति की समीक्षा होगी, उसमें भी मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई खबर नहीं आएगी जिससे कि स्टॉक मार्केट को उथल पुथल हो कि इंटरेस्ट रेट शायद कम हो जाए। Moving on to commodities, and before we take the story on commodities, let's have another look at one of the stories. The National Highways Authority of India (NHAI) has issued an advisory for Paytm FASTag users to switch to another bank FASTag before March 15th. The Road Transport and Highways Ministry said this will help avoid penalties or any double fee charge while commuting on national highways. And let's now move on to commodities. Crude oil futures rose today as investors digested the International Energy Agency (IEA's) latest oil market report, in which it made a top revision for demand growth forecast and cut its projection for non-OPEC supply in 2024. In intraday trade, Brent crude was trading at $84.67 per barrel. The West Texas Intermediate crude price was at $80.44 per barrel when reports last came in. बात मूल्यवान धातुओं की करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंध वाला सोना 133 रुपये सस्ता होकर 65,764 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। हालांकि मई अनुबंध वाली चांदी 395 रुपये की तेजी से 75,565 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। And with that, we come to the end of this program. Thank you so much for coming to the studio and discussing the stories with us, Mr. Bhattacharya. And before we close, a look at the headlines. Stock markets rebound on buying in IT stocks. Sensex ends over 73,000 mark. Nifty finishes near 22,150. Prime Minister Narendra Modi distributes loans under PM Swanidhi scheme to 1 lakh street vendors. And India's WPI inflation eases to 4-month low of 0.2% in February. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye, namaskar. एक आकर्षक निवेश के साथ साथ एनपीएस समानता का भी साधन है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है।